Hello students, welcome to my channel Learn with Nisha ji. So today we will be discussing some factors which affect evaporation. So before we proceed, I would request you to kindly subscribe my channel and like and share the video as much as possible. So let us study evaporation. Do we always need to heat or change the pressure for the state of matter change? क्या हमें हमेशा हीट या प्रेशर चेंजेस चाहिए दैट वी हैव टू चेक ओके कैन यू quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Okay, so water when left uncovered slowly changes into vapor. जैसे सपोज आपने एक बाउल के अंदर वाटर रखा है एंड इट स्टेज देयर फॉर 2-3 days, तो वो उसमें खुद ही इवेपोरेट हो जाएगा. ओके, इट विल चेंज इनटू वेपर, राइट. वेट क्लोथ्स ड्राई अप. आप जैसे आपके वेट क्लोथ्स वेट हैं जिसमें वाटर है, तो अगर आप उसे मींस कहीं पे स्प्रेड कर देते हो तो इन 1 or 2 days अगेन इट ड्राइज अप. तो उसमें जो लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर. तो दोनों ही एग्जांपल्स में व्हाट इज हैपनिंग, द लिक्विड वाटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, right? But you are not actually taking a burner and heating anything, right? So we know that the particles of matter are always moving and are never at rest. So at a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. So in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and it gets converted into vapor. So this phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो एक्चुअली ये जो कन्वर्जन हुआ है स्टेट का फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो नहीं हुआ. ओके, मे बी आपका रूम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है या 48 डिग्री सेल्सियस है, सो इट्स क्वाइट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, बट उससे पहले जो आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो गया इस फिनोमेना की वजह से ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, that is referred to as evaporation. Okay. So now we see the factors affecting evaporation. Okay. We will do an activity 1.14. It's a very simple activity. So you take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Then next you take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan again. Next, you take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. So then you record the room temperature. Now you have to record the time or the days taken for the evaporation process in all the three cases. Now you repeat the above three steps of activity on a rainy day and then record your observations. So what do you infer about the effect of temperature, surface area, and wind speed or wind velocity on evaporation? ये तीनों का हमें impact देखना है evaporation पे, right? So ये थोड़ी हमारी general observation भी होती है कि the rate of evaporation increases with the increase of surface area. Okay, evaporation क्या है? एक surface phenomena है. Surface phenomena क्यों कह रहे हैं? हमने देखा था कुछ particles जिनकी कुछ kinetic energy है जो surface पे lie करते हैं, they try to leave out. Okay, so that's why if it's a surface phenomena, if the surface area is increased, rate of evaporation will increase. Okay, जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देख सकते हो. सपोज यू हैव टू लाइक ड्राई सम क्लोथ्स. ठीक है, तो जब आप क्लोथ्स को बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट कर देते हो तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज अगर आप उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे. करेक्ट. सो नेक्स्ट वी सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी. ओके, तो वो हेल्प करेगा लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए.
तो बेसिकली आपका अगर टेम्परेचर राइज करता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी राइज करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, ओके, सो इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। all right, because the air around us, it cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. तो अगर आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका डिक्रीज करेगा। तो रेनी सीजन में जो क्लोथ्स को ड्राई करने में हमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज टू स्लो, दैट्स द रीजन। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर किसी दिन अगर आपकी बहुत अच्छी हवा चल रही है, मीन्स विंड स्पीड इज वेरी गुड, सो दैट डे यू आर एबल टू ड्राई द क्लोथ्स इजियर, राइट। तो आपकी जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज करेगी, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विंड, ओके, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। वो एयर क्लियर हो जाती है और उसके अंदर मोर वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स कैन कम। तो आपकी जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज करेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगी, राइट। तो इन सभी फैक्टर्स को आप अच्छे से गो थ्रू करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इसके बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें। ऑल राइट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, and stay tuned for more lectures on my channel Learn with Nishal.